Welcome back. At least 700 Indian students are facing deportation from Canada as we speak. This is coming after colleges in Canada say that the admission letters given to these 700 students by their travel agents were fake. These students, mostly from Punjab, have hit the streets protesting against their potential deportation. The students allege cheating by a Jalandhar-based immigration agent. The students say they had no idea that they were handed fake admission letters. Many protesting students are echoing pretty much the same story. They arrived in Canada in 2018 with an admission letter. They were told that the universities were overbooked and were transferred to a completely different university. Worried students who had already spent lakhs of rupees agreed to switching universities. Now, as per reports, the travel agent charged over 16 lakh rupees per student. Cut to 5 years later in 2023. The fake admission documents are now coming to light when these students are applying for work permits and permanent residency. External Affairs Minister S. Jaishankar has also reacted, saying it is unfair on the part of the Canadian authorities to punish a student who undertook their education in good faith. Listen in. For some time now, there is this case of students who the Canadians say did not study in the college which they should have studied, and when they applied for a work permit, they got into difficulties. From the very start, we, meaning the Foreign Ministry here, as well as our High Commission and the consulates in Canada, have taken up their case, and our point is that, look, the students studied in good faith. If there were people who misled them, the people who misled them, the culpable parties should be acted against. It is unfair to punish a student who undertook their education in good faith. Now, Canada is one of the most preferred countries for higher education by Indians. Over 2.26 lakh Indian students went to study in Canada in 2022. And students from Punjab make a huge chunk of this number. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, however, has given assurance saying that the Canadian government will give each student an opportunity to present their case. Now, Punjab's NRI Minister Kuldeep Dhaliwal has requested the centre's intervention to punish the travel agents who cheated students. But many people can say that this actually will be the job of the Punjab government. In fact, we are hoping to be joined by Mr. Dhaliwal in just a bit, because this is a story that impacts mostly students from Punjab, which is why you have Punjab's NRI minister appealing to the External Affairs Minister, asking him to intervene. Now, as you know, as many as 700 Indian students, mostly from Punjab, are facing this deportation from Canada. Mr. Dhaliwal, you're joining us on the broadcast. Today is a day when you have written to the External Affairs Minister of India asking him to intervene. How do you expect him to intervene, given the fact that the Canadian authorities and colleges are very clearly saying that the admission letters that were given to these students were fake and they didn't study in universities they were supposed to study in, sir? It's an issue है करीब 700 स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है और ये पंजाब की हिस्ट्री में उन तक का सबसे बड़ा इमिग्रेशन फ्रॉड है। सबसे बड़ा इमिग्रेशन फ्रॉड हुआ कि 700 जड़ा स्टूडेंट है बेचारा वो उत्थे फस गया और सब तो ज्यादा मतलब सोचने वाली गल है ये जड़ा इमिग्रेशन माफिया ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। उसके बाद उन लोगों ने 4-4 साल एजुकेशन ली
बहुत सारा 15-15 लाख रुपया उन्होंने पहले दिया और 4-4, 5-5 साल 17-18 की ये बात है, 17-18 की 4-4, 5-5 साल बाद उन्होंने फीसें कॉलेजों में दी, रात रहने के लिए प्रबंध किया, कई कुछ खर्च किया। तो देखिए इतने देर बाद ठीक कनेडियन है। सरकार ने बोल दिया कि आपके पेपर जो फेक थे, आप फेक वीजे पे आए हो, इस करके जड़ा ताडा जड़ा तानू डिपोर्ट कर रहे हैं। सो मैं समझदा कि बहुत गलत बात है और मैंने ठीक है। जो देश के विदेश मंत्री है उनको लेटर भी लिखी है, उनसे टाइम भी मांगा है। आज मैंने मतलब जो लेटर लिखी है वो लिखी है कनेडियन जो इमिग्रेशन मंत्री है उनको भी लेटर लिखी है और जो हाँ। इंडियन एमपी है उधर 12-13 लोग जो अपने पंजाबी और दूसरे इंडियन एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट, कांग्रेसमैन, उनको भी लेटर लिखी है कि इन लोगों का क्या कसूर है, इनकी मदद की जाए। और आज हमारी मीटिंग थी पूरी एनआरआई डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो हमने तय किया कि हम एक जो लीगल पैनल है, वकीलों का एक पैनल कनाडा में वो बनाएंगे जो इन स्टूडेंटों का, क्योंकि उधर जो केस है वो आपको पता है कनाडा अमेरिका का जो कानून है वो उधर उधर के ही वकील लड़ सकते हैं। हम स्टेट के सीधा जी। कोई दखलंदाजी नहीं कर ठीक सकते, है। हम थ्रू जो केंद्र सरकार है उसके दखलंदाजी कर सकते हैं। और हमने एक पैनल जो वकीलों का ओके। वो आज रात को बनाएंगे। कुछ वकील तो ओके। आप आ रहे सो कि हम मत करेंगे इसेंशियली धालीवाल बच्चों की। साहब, राती ले- राती मेरी बात भी हुई उनके साथ, धालीवाल साहब, मैं जरा बता बच्चों दूं को अपने व्यूअर को आप बोल क्या रहे हैं। एक मिनट जरा रुक जाए, मैं बता दूं अपने व्यूअर को आप क्या बोल रहे हैं। Essentially what Mr. Dhaliwal is saying, that there is no direct intervention that the Punjab government can make on its own, which is why the government of Punjab has decided to form a panel, a legal panel that will be able to assist all the students, all the 700 students in fighting their case in Canada. धालीवाल साहब, ये आप बच्चों की मदद करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, आप लोग एक लीगल पैनल बना रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि ये पंजाब का सबसे बड़ा जो है इमिग्रेशन फ्रॉड है। मैं मान रही हूँ 700 बच्चों को इस तरह बेवकूफ बनाना मतलब बहुत ही गलत बात है और बहुत ही बड़ी बात भी है, लेकिन इसको रेन इन करना अब तो आप लोगों के हाथ में है, राइट? आप कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी मदद करे, लेकिन इस इमिग्रेशन माफिया को रेन इन करना तो अब पंजाब सरकार के हाथ में है, आपके हाथ में है। हम करेंगे। हमने आज डिसाइड किया है कि 10 जुलाई तक पंजाब के अंदर जितने भी इमिग्रेशन एजेंसीज है, बहुत ज्यादा है, सभी के पेपर चेक करने के आज मैंने अफसरों की ड्यूटी लगाई है। सभी के पेपर चेक करो, कौन लीगल है, कौन गैर कानूनी काम कर रहा है, कौन कानूनी काम कर रहा है। जो गैर कानूनी काम कर रहे लोग हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, क्योंकि आगे से किसी बच्चे के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। ये तो बच्चे थे, स्टूडेंट थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मनुखी स्मगलिंग का धंधा है जो लोग कर रहे हैं, ये मतलब जो अरब कंट्री है उधर हमारी लेडीज को, हमारी तीयों बहनों को उधर करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको घर का काम बने मिल दवाएंगे, उसके बाद जो उधर उनको चलना पड़ता है वो भी बहुत औखा है। तो जो लोगों को झूठ बोल के विजय लगा के इधर बोल देते हैं कि आपको अमेरिका ले जा रहे हैं, आपको कनाडा ले जाएंगे, और रास्ते में कोई कहीं फंस जाता है, कोई कहीं फंस जाता है। सो हमने आज डिसाइड किया है कि जो इमिग्रेशन लॉ है इसके बीच भी कुछ शोध करने की लोड़ पड़ी तो पंजाब गवर्नमेंट भी, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी है, उन्होंने भी ये डिसाइड किया हुआ है कि पंजाब से मनुखी स्मगलिंग का जो धंधा है इसको खत्म करना है। और मैंने कल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी बेनती की थी कि आप भी ये देखें देश के लेवल के, केंद्र गवर्नमेंट के लेवल पे, कि जो इमिग्रेशन लॉ है उसमें क्या क्या कमजोरी है, जो लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार इन बच्चों के साथ है, इन बच्चों की हर तरह मदद करेगी। इन बच्चों के साथ जो भी जिस तरह का सहयोग भी, मैंने रात बच्चों को कॉल करके, सभी जो धरनादारी बच्चे उधर बैठे हुए उनको कॉल करके बोला कि जैसी भी मदद चाहिए पंजाब सरकार आपकी मदद करने के लिए तैयार है। थैंक यू।
Thank you, Mr. Dhaliwal, for speaking to us. You're telling us that you'll do everything to help these 700 students. You're forming a legal panel which will assist these students in fighting their case in Canada. And you're saying it's not just about students, that unscrupulous travel agents, immigration agents, etc., also take away women from Punjab, promising them household works in various countries across the world, and those women don't end up in the right places. So that is a worry as well. So there is going to be a crackdown on all these immigration agencies. There's going to be an audit as well. We'll leave it there, Mr. Dhaliwal. हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. Good to hear from you. Thank you very much. From Punjab.